ये है माई 11 सर्कल फैंटेसी पिक ऑन ESPN Cricinfo। मैं हूं रौनक कपूर और मेरे साथ जुड़ेंगे ब्रैड हॉज as we look ahead to try and help you pick a fantasy team for the Big Bash League match between Melbourne Stars and Sydney Sixers. Right, let's start with our pro tip और जिस तरह का फॉर्म Melbourne Stars के बल्लेबाज है, then our pro tip is that you try and pack the team with as many hard-hitting Melbourne Stars batsmen, especially if they chase, because उनका chasing record काफ़ी अच्छा रहा है in this year's Big Bash League. Brad Hodge, is this a potential dress rehearsal to the final? The two best sides you think so far in the tournament, Melbourne Stars and the Sixers? Yeah, they certainly are the Stars when they have their full complement of a team, and similar to the Sixers as well. So, when the Sixers, they might get Steve Smith at the back end, they might get Nathan Lyon. The Stars actually have just lost a couple in Zampa and Hanscom, but when they get their back, they're certainly going to be tough to beat. They are two of the probably top four sides in the comp, no doubt. याद रखिए कि काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो अब इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए जा चुके हैं, सो मेक श्योर यू लुक एट लेटेस्ट अवेलेबिलिटी ऑन ESPN Cricinfo। लेकिन चलते हैं हमारी टीम की तरफ। वील हेल्प यू पिक अ टीम ऑफ कोर्स। और सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि माई 11 सर्कल ऐप पे आपके पास 100 क्रेडिट्स है जिनमें से आपको आपकी टीम बनानी है, एंड यू कैन पिक योर टीम फ्रॉम 4 अवेलेबल कैटेगरीज ऑफ प्लेयर्स, दैट्स बैट्समैन, बॉलर्स, विकेट कीपर्स एंड ऑलराउंडर्स। और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक टीम से 7 प्लेयर पिक कर सकते हैं अपनी फैंटेसी टीम में। चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉप पिक्स और हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइस के साथ। शुरू करते हैं ग्लेन मैक्सवेल के साथ, बिकॉज ही हैज़ बिन इन सेंसेशनल फॉर्म फॉर मेलबर्न स्टार्स। 9.5 क्रेडिट्स के साथ ही इज़ ऑफ कोर्स टॉप बिडिंग ऑन द ऐप, और साथ ही जिस तरह के बैटिंग contributions दे रहे हैं in quick time, Glenn Maxwell, and he's of course been handy with the ball as well. So someone who's been instrumental in his team being in the right half of the table, Glenn Maxwell is our captain choice. Haris Rauf, जिनके नाम अब एक Big Bash League hat-trick है, तो Haris Rauf is stolen the headlines in the last week or so in the Big Bash, and with 9 credits, we're thinking that जो उनकी extra pace है और जिस तरह के form में है, जो उनका confidence है फिलहाल, तो Haris Rauf is someone you can't ignore. So he's the vice captain choice for 9 credits. और ये ध्यान से अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन को पिक कीजिएगा, बिकॉज दे गिव यू 2x and 1.5x द पॉइंट्स। टॉप पिक्स में से मार्कस स्टॉइनिस है, तो मेलबर्न स्टार्स के प्लेयर्स भर भर के हमारी टीम में शामिल है 9 क्रेडिट्स के साथ। मार्कस स्टॉइनिस ऑफ कोर्स इज आल्सो बीन इन एक्सीलेंट फॉर्म विद बैट। आपको मिलेंगे ऑलराउंडर कैटेगरी में, बट ही इज एसेंशियली बीन कंट्रीब्यूटिंग विद बैट and is one among the top run getters in the tournament, over 300 runs already. Tom Curran, जो special situation में Sydney Sixers को gets them over the line, and he's been handy with bat and ball, and एक vital player है for the Sixers। अब 9.5 credit से he too gets top billing, तो Tom Curran आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। He's in our top picks as well. Maxwell, Haris Rauf, Marcus Stoinis and Tom Curran. Brad Hodge, the top picks pretty much pick themselves. They certainly do. There's a nice quartet of players there, there's no doubt. Maxwell, Tom Curran's been in great touch, and Haris Rauf, as you mentioned, lit the Big Bash up with a hat-trick, so he's definitely been on fire. कुछ वैल्यू पिक्स की तरफ भी बढ़ते हैं, और यहाँ पे जोशुआ फिलिप का नाम आप देखेंगे 9 क्रेडिट्स में सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। विकेट कीपर बैट्समैन है जोश फिलिप, और अपने बड़े शॉट्स के साथ हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस साल बिग बैश लीग में कि ही इज़ गॉट द बिग शॉट्स इन हिम, डज जोशुआ फिलिप। साथ ही लॉयड पोप जो लेग स्पिनर है, युवा खिलाड़ी है, 8.5 क्रेडिट्स में। यू कैन फाइंड हिम फॉर गुड वैल्यू इन दिस टीम, एंड सिर्फ एक आध मैच में ही वो विकेट लिस्ट जा चुके हैं, सो अदरवाइज ही ऑलवेज गेट्स यू सम पॉइंट्स, डज लॉयड पोप। Let's look at our 11 for this game. Joshua Philippe is our wicket-keeper choice, the Sixers keeper. Batsmen will be Daniel Hughes, Nick Larkin and Jordan Silk. All-rounder है Marcus Stoinis, Tom Curran और Glenn Maxwell हमारे कप्तान. On bowlers will be Ben Dwarshuis, Haris Rauf our vice captain, Sandeep Lamichhane and Lloyd Pope. ये पूरी टीम आपकी बन जाएगी for 97 credits. That's well within the 100 credits on the My 11 Circle app. Thoughts on that team, Haji? Yeah, not sure Sandeep Lamichhane is in our best 11 at the moment. He's been right off the boil, I reckon, in the last couple of games. Going at 10s last game. So I'm just nervous. I'd be keeping a close eye on whether Steve O'Keefe is fit or whether Nathan Lyon is fit. And if they're ready, I'd be putting them in the 11 for sure. If you don't pick Lamichhane, who's going to translate for Haris Rauf when he wins another man of the match? That's a good point. I don't think he needs to. What do you say to Haris Rauf, as bowl as fast as you can at the stumps, and you get plenty of wickets, son. Enjoy your game.
Many thanks to you, Brad Hodge, for your time and your thoughts. और ये थी हमारी फैंटेसी चॉइस फॉर दिस गेम बिटवीन मेलबर्न स्टार्स एंड सिडनी सिक्सर्स. ध्यान याद रखिए कि टॉस के बाद प्लेइंग 11s को देख के ही अपनी फाइनल टीम पिक कीजिएगा. एंड ऑफ कोर्स we'll be back with more insight from Brad Hodge on the best information and data that we can get you to pick your team in the Big Bash League. ये था My 11 Circle Fantasy Pick on ESPN Cricinfo.